Much. Thank you very much, sir. Friends, we can take some questions now. 55. सर मेरा सवाल अग्रवाल जी से है। सर आप भी कहते हैं कि देश में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है, केजरीवाल जी भी यही बोल रहे हैं, लेकिन कल एक एसएचओ लेवल के अधिकारी को 24 घंटे घूमना पड़ा है। आम आदमी का क्या हाल होगा सर? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज शुरू से रही है, और अगर आपकी नॉलेज में होगा तो करीब इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में ही जो उनके प्रोसेसेस हैं, उन्होंने करीब 8,000 बेड की प्लानिंग की हुई है जो कि कोविड डेडिकेटेड है। आई वुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में कोई किसी टाइप की कोताही रही है तो उसको स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करके सॉल्व किया जाएगा। हम स्टेट से बात भी करेंगे इसके विषय में। लेकिन अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इससे पहले भी कई बार हमने बताया है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेडेड वे में अपग्रेड करते रहे हैं। तो जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती रही, उसको एंटिसिपेट करते हुए उसी हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते रहे। 116 नीलो। से मेरा सवाल है सर, एचसीक्यू को लेके अभी 2 दिन पहले आईसीएमआर की एडवाइजरी आई थी जिसमें आपने उसका यूज़ जो है बढ़ा दिया और पुलिसकर्मी जितने भी थे सबको दिया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उसे बैन कर दिया है अभी उसका। वो आप क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आईसीएमआर का अगर कुछ स्टडी और कह रहा है, लैंडसेट कुछ और छाप रहा है, बाकी और कह रहे हैं, सच्चाई कहाँ है या कोई कॉन्स्पिरेसी है बड़ी? Good question. I think this is a very important question. What I would like to clearly say that this COVID is an evolving field. We do not know which drug is working, which drug is not working. It's a lot of drugs are being repurposed for the use of COVID, whether it be for prophylaxis or for the treatment of COVID. Now we all know that chloroquine is a very old anti-malarial drug for it's been in use for nearly 100 years. And the hydroxychloroquine is even safer. And if I do not know, I belong to the generation when we had inland letter cards जो होते थे जिसमें चिट्ठी लिखते थे, उसमें गोले बने रहते थे, मलेरिया की गोली 4 पहले दिन, फिर 2 दूसरे दिन, 2 तीसरे दिन, वो बना रहता था. So it was widely used drug for malaria, and it still is a widely used drug for malaria. So now the biological plausibility was supporting that it is possibly an antiviral drug. Once we got the biological plausibility, and we also felt that we had conducted some in vitro studies in labs in the test tube, and there was data supporting that also. So in vitro studies were conducted in the past and published in several papers in Nature and other magazines that you know of, which showed that it has antiviral activity. We did a similar study in vitro, that is in the test tube, and found that it is an antiviral drug. It has antiviral properties. Now it was very popular drug suddenly when the American government also started using it, and they got fast track approval or emergency use authorization for. We had thought that it may be a useful drug for prophylaxis, for prevention of COVID, and taking the biological plausibility, one, taking the in vitro data, and taking the availability and the safety of this drug, we had recommended it for as empiric use under strict medical supervision about a month and a half back. And then we also said that some studies should be started to look at where is hydroxychloroquine performing. During these 6 weeks or 5.5 or 4.5, 5, 6 weeks, we got some data in India, and they were mainly observational studies. Some of them were case controlled studies, which and some of us were observational studies in different cohorts, which were done at AIMS, was done at ICMR, the case control study, and also in 3 public hospitals within Delhi. And now it was very difficult to do a randomized trial of something which we say may benefit. So randomized trial was not possible.
So we looked at the data from these observational studies as well as from the case control studies, and what we found that it may be working. So therefore, and we also found that there were no major side effects except nausea, and that was from the Indian Pharmacopoeia Commission results of all the people that were being monitored for hydroxychloroquine. And therefore we found that much of them were complaining of nausea or vomiting and some palpitations occasionally. So जो एडवाइजरी अब 18 मई वाली परसों वाली हमारी कह रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्लियरली ये लिखा है फॉर प्रोफिलैक्सिस, एक तो इट शुड बी कंटिन्यूड बिकॉज देर इज नो हार्म, बेनिफिट मे बी देयर. One point. The second point was important was that we found that the side effects, and we clearly advised that it should be taken with food. So nausea, vomiting जो हो रहा है वो खाली पेट खाते हैं तो दिक्कत होती है. So it has to be taken with food. That is one very important thing. The third point which we emphasized in this advisory was very clear that we need to do one ECG during the treatment of this prophylaxis. So we expanded the recommendation from healthcare workers to frontline workers who can use this drug, 2 tablets on day 1 and then 1 tablet after 7 days, every 7 days, 400 milligram, which is 2 tablets every 7 days for 8 weeks. And we can also continue it beyond it once we have one ECG available that it is safe. So this was the advisory which we have given. Based on looking at the risk benefit, we found that possibly it is more that we should not deny our frontline workers and healthcare workers who are going to be dealing with the patients of COVID and can get some treatment. At the same time, we also said that the use of PPE should be continued, personal protective. उसमें हम लोग को बिल्कुल भी राहत नहीं है, मतलब that has to be continued. And the study which will be published very soon will also talk about how many were taking PPEs, how many were what were the side effects, how many were beneficial, and that is how we'll talk about that. Number 5. सर मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे ICMR से. पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है? और दूसरा सवाल, WHO ने जो सेकेंड वेव को लेकर चेतावनी दी थी, ये क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो मैं आपका दूसरा सवाल पहले बताऊंगा. तो सेकेंड वेव को बचने के उपाय को डॉक्टर लव अग्रवाल ने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं. Physical distancing, frequent hand washing, cough etiquette, wearing a regular mask, till such time we find a drug which works or we find a vaccine that works. Coming back to your first question, I would say that we have very clear-cut containment areas which are there, which are the red zones, which are being tackled, they are being studied. Their prevalence is being studied, their seroprevalence is being studied. Before that, it is not wise to comment on anything else. 36. Pallav Bagla from the Science and New Frontiers. Question for Dr. Bhargav. 1, very happy to see you after a month. 2, why is the fatality rate in India lower compared to other countries? That's one part. 2, if the fatality rate is low, from medical reasons, do you think the time has come to end the lockdown once and for all? Yeah. Thank you for, we were busy setting up those 612 labs in these last 1 month, so my absence, but now we have crossed 1 lakh of cases and that was the intent. In terms of the fatality rate, it is very difficult since this is an evolving field, and we have surprisingly found a low fatality rate in India, which is very good because that is the ultimate thing. Ultimately, we are interested in the patient surviving, whether he gets a COVID or doesn't get a COVID, he has to survive. So that is low in India. There were several hypotheses that we are
living in bad hygiene, we are more, we have higher immunity, we have been given certain injections in the past for tuberculosis, BCG has been implicated. But these all are hypotheses. We cannot say any clearly on any of these factors. But so long the fatality rate is low, I think we should be happy, and I think hope it continues that well. That is the most important thing as far as I am concerned. Sir, if I may supplement. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए अगर हम देखें तो हमारे मैनेजमेंट एफर्ट्स में इन्फेक्शियस डिजीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और हमारा जो देश का ग्रेडेड एफर्ट्स रहा है, जबकि WHO ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जब उसको जनवरी एंड में डिक्लेयर किया, उससे भी 13 दिन पहले हम लोगों ने एंट्री स्क्रीनिंग देश में शुरू की। उसके साथ ही हमने जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पर केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आप एक इन्फेक्शियस डिजीज टाइम पर केस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वह केस सीरियस नहीं बनता, और जब वह केस सीरियस नहीं बनेगा तो टू दैट एक्सटेंट आपकी फैटेलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वाइल देयर माइट बी अदर हाइपोथेसिस जैसे कि सर ने बताया है, लेकिन जो मेन हमें समझना पड़ेगा कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस किया, उससे हमें हेल्प है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्या हर केस फील्ड पर हम जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जिसके लिए एम्स पर हम लोगों ने जब केसेस की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई, उसी समय पर एम्स पर 24/7 एक हम लोगों ने मैकेनिज्म क्रिएट किया। हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर को, मेडिकल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसको कि टेक्निकल गाइडेंस देते हुए, जिसके थ्रू हम लोग आज मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली फॉलो हो। तो वाइल देयर माइट बी अदर रीजंस, बट वन मेजर फैक्ट एज फार एज एनी इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड is early identification and follow-up of protocol.